2001. In fact, we were the first in India to start this kind of a workshop, and later it became industry standard. And this is almost 20 years. A lot of time we have people who have attended the workshop and then come as a faculty also. So that's and so I'm a mechanical engineer, and I did my MBA from Pune University, and before I plunged into entrepreneurship. Apart from Hitbullseye, you know, we run multiple other things also. We run 7 CBSE schools. This is one of them where you are sitting, and we run a lot of B2B businesses. We work with GMAT to Symbiosis to MDI to Narsi Monjis of the world, and B2B again we work with most of the universities, Narsi Monji, UPS, LPU, Chitkara, where we do a lot of technical and aptitude trainings. Recently we have worked on a new project. We have got into B2B consulting of schools, so that's business side of it. Otherwise I have been a past president of TIE Chandigarh chapter, which is a global body of entrepreneurs, and by virtue of that I had the fortune to meet so many CEOs and the founders across the globe. Coming down to the workshop today, okay, if you see the itinerary today, I'll just explain, don't open, you have the entire thing with you. After this session we are going to have a live interview in front of you. We'll ask for 2 volunteers, and we will try to show you. So we have 2 expert faculties for that session, which will be Deepak Tokral and Akashdeep sir. And then after that session there will be session by Anup Ohri. Anup will be taking care a workshop on essay writing. Then there's one more session which will be taken by the Anup, which will be on the case writing. A lot of time a situation is given to you instead of a topic, right? So that will be session. There will be a current affairs session by Manish Mittal sir, who is an expert in GK and current affairs. I will be taking one more session on art of conversation in an interview. Probably that is a very unexplored area, I have realized, because as the time passes we also evolve in our strategy and how should be prepared. So recently we introduced this full session on art of conversation in the interview. And then there will be one session on how to sell yourself in an interview by Sanmeet Sidhu sir. That will be the last session for the day. So all the sessions will keep on continuing in this hall only. We will have a tea break. Tea break will be here. Then we'll have the lunch break, and dinner will be served around 8:45 or 9 o'clock. Last session will be feedback, where we like to take your feedback, and because every year we want to improve, we want to suit to you, your needs, right? That's the format of the day. For the interviews, what we are going to do, 12:30 we are going to start interviews, and I hope everybody has resumes ready. And we are going to give you a tentative time, right? Because you yourself sometimes have more questions to ask to the panel, right? So it's a tentative time which you will be getting. We will call you from the room 10-15 minutes in advance once you finish the interview. So it's a format is 20 plus 10, 20 minutes for the interview, 10 minutes usually for the feedback. We'll give you the feedback, you come back to the hall, and the classes will continue. So everybody will get 2 interviews, right? And which will give you a sufficient exposure that how the interview are going to be conducted. And obviously there will be 2 separate panels. Most of the people, there were at least 2 people in the panel, and let me tell you, most of the faculty have been the part of workshop across the years, very trained and seasoned people, and who have seen so many people and guided them journey to the top B schools, right? And so that I can proudly say that there's a legacy we follow. Anup sir, when he was a student at Hitbullseye, I used to teach math. so we have that kind of a legacy, and today Anup for so many years have been teaching in IIMs. We have some of the people who actually go to IIMs to recruit. And I have seen people, sir, वो जो workshop में sir आए थे ना,
वो PPO पे आप बोल रहे थे. So that's the kind of faculty we have, right? So you have a lot of opportunity to learn. So that's the format of the workshop. Is that okay? Anybody has a question related to the format of the workshop? Right? One more thing. We are not here for fun. We are not here for a picnic or a joyride. The day is going to be long and exhaustive. It is for you and it is for me and it is for entire team we have. Right? When we start at 7 o'clock, 7:30 and we finish at 10 o'clock, obviously it's going to be 13 hours. Right? So please focus, because we are here for a purpose. Right? We are not here for bodily pleasures. I hope you understand that. Right? We are here for a task, and when you are for a task, things are not easy. Right? Okay, so please do not complain on that कि लंबा था. You have to have that energy. Let me tell you, if you are going to IIMs, and I wish you all, please get ready to this kind of a schedule. Right? Okay, so coming down to the first part, the second part is tell me honestly, I want now honest some answers. When you received the call, right? It was almost a month back. Yes, at least the CAT result, and 1 month down the line we are here, right? Tell me, how many of you think genuinely that you can convert your best call? You can convert your best call. Okay, so I see 50% of them. Okay, now can I ask again, we are here to learn, please understand. What makes you think that you cannot convert your best call? Be candid and honest here. We are here to learn. There's nothing. क्या लगता है आपको? कुछ तो आता होगा ना दिमाग में. Something must be there in your mind that I cannot convert. There's something which is there missing. What is that? It could be a fear, it could be inhibition, it could be your self-confidence. Yeah. Making up stories. Making up stories in the interview. Making Up stories in the interview. Why we need to make stories? You have to just present yourself. Just to make justify our answers. No. So interview is not about making stories. Interview is all about being what you are, close to what your natural self is. Little polished, that's it. Okay, what else? Half of the people said they cannot convert their best call. What makes you feel so? Please be open up. Yeah. Finding the content in 60 seconds. Pardon? Because in introduction we get 60 seconds or 40 seconds. No, not necessarily not 60 seconds, 40 seconds. You can carry your introduction sometimes to 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Interview is a very dynamic process. This is not a Shark Tank. You get pretty openness. Okay, so when I say you have to do things in less time, obviously you have to be concise. Right? Okay, what else? Please. Half the people thought that they cannot convert their best call. And I want to know the reasons. Okay, so if you know, when it was discovered that Mount Everest is the highest peak in the world, probably I'll modify the question. How many of you know that how many years it took the mankind after realizing that it was the highest peak to conquer? Anybody? Can anyone get guesses? Pardon? 8 years. Yeah, 100 years. Just imagine mankind, after realizing that this was the highest peak, it took 100 years to conquer. You know, till that time, what people used to think? Some people tried, they failed. And everybody thought it was impossible. Right? And then someone took and reached the Everest. The entire mankind started thinking it is
Today you talk about first woman, first blind, first with a heart surgery, first without limbs. Today, there is a death zone called near Mount Everest. People die not because they die, because there is so much traffic. Have you seen those videos? People are standing in queue. So that's the story of Mount Everest. So remember one thing, things may sound impossible. I'm giving an example. So the first thing, what would we draw a lesson from it? The lesson is very simple. Unless you start thinking it is possible, it is next to impossible to convert a call. So I'm talking a small thing here. We're talking about converting opportunity which we have got from a B school is converting a call. Tomorrow there will be 100 more bigger opportunities, but we feel that I cannot do it. That's the first thing you have to remove. And what makes you think that you cannot do it? There could be multiple factors. Most common is, I'll say, poor, I'll use the word inverted comma, poor self-esteem. If you somebody understands psychology, so we say you don't have a confidence on yourself first, right? And I can tell you, I have seen people going to IIMs who couldn't speak even any fluent language, who were from a very humble background, and blah blah and so on and so forth, right? But what they had only was they believed in themselves that they can do it. So that's the first part. What is the first part? Self-belief. And I cannot make you believe, please understand. You have to change your wiring for it, right? That's the first step. Now what is the second thing? All of us know about Sachin Tendulkar, right? And I think most of us have read a lot about him, stories about him. But you know what is to learn from Sachin Tendulkar's life is very important for us. The first thing is that this person was even on the nets on the last day when he decided to quit. Last day, right? When he was at the peak of his career, he will never miss a practicing session. So this is a famous book called Power of Habits. Yes or no? Because entire his career, he said practice is a part of his habit. Like you go and take bath, you brush our teeth, it's a part of his habit. There are no questions asked on it. It's not the question of today I am good or bad, should I practice or not? Yes or no? So second point, hard work. Let me put it straight. No one is born with skill. All of us had certain opportunity to go to a good school, good college. It's okay. I started my journey in schooling in a government school, and I used to sit under tree till class 8th. In 9th and 10th we were fortunate to get a room, and the best part, जिस दिन बारिश हो जाती थी हमें छुट्टी हो जाती थी, क्योंकि कमरा तो है ही नहीं बैठने के लिए भाई. It's as simple as that, right? And so a lot of people have access to different opportunities in life, right? But if you are focused, if you hard work. So second thing which I want to pay attention from Sachin Tendulkar's life, you know, and what year Sachin Tendulkar was made captain, and he quit as a captain, and he is one of the rarest cricket player who played cricket after leaving captaincy. You know, it is not easy. कैप्टन होने के बाद आपका कोई जूनियर जब आप
खेलते थे तो वो बच्चा था, वो टीम में आया, बोला सचिन पाजी, सचिन सर, आज वो आपको क्या करेगा, कमांड करेगा, इधर लगती है बॉस, हिट होता है नहीं होता, हाँ हिट होता है। लेकिन सचिन तेंदुलकर हैज नो ईगो, बिकॉज ही हैज ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेल्फ अवेयरनेस। अब ध्यान से समझना इसका मतलब, जब हम इंटरव्यू तैयारी की बात कर रहे हैं ना, बिकॉज सचिन हैज ए फैंटास्टिक सेल्फ अवेयरनेस कि बॉस आई एम नॉट ए कैप्टन मटेरियल, आई नॉट टेक टू माई ईगो, I am here to play for my country. I enjoy cricket. I passionately play cricket, and I'll keep on doing that. A single focus, right? And he could play even after leaving captaincy for 10 years. You tell me one player after leaving captaincy he could play for 10-12 years. You will not find, because a lot of people get into the ego. So Sachin Tendulkar had absolute clarity. So here the problem is, when we are preparing for the interview, we have a lot of clarity about all bullshit in the life. क्रिकेट टीम में कौन होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए, किसको कौन से नंबर पे भेजना चाहिए. People can argue for 2 hours. But when they speak for you, on you for 10 minutes, people have no idea. Because we do not introspect. So interview preparation is first self-awareness, because if you have good self-awareness, that's the key to success, because you realize your strengths, you play on your strengths, you work on your weaknesses. So I'll give you one more classic example. Navjot Singh Sidhu, right? You have any idea, any of you know that till he was playing his international cricket, you know, even after hitting a century, what nightmare he used to have? Anybody, any guesses? Press conference. He will run to the dressing room and hide in the dressing room and say, boss, I cannot speak in front of media. Today Sidhu doesn't stop. Am I right? And at what age he changed his weakness to strength after quitting the. You are too young to change any weakness, right? So it's not that even you are weak and you are self-aware of your weakness and you sleep over it, right? Because God has given us a brain and ability to work, right? And it starts all from I am possible, it is possible, right? So hard work. Third point which I want to draw you across is, if you want to get into the IIMs or any top college, and not only this, if you want to be successful in life, one thing remember, there is no room for arrogance. I remember a couple of years back, like this workshop, we had a student who had six good calls, 3 IIMs, FMS, XRI, MDI. I remember I told one of my faculty, sir, I do not see this person actually converting, and unfortunately our fears came true. He couldn't get into any of the colleges. 6 calls, butchered, and I could see that, and I could not see because he was not capable. National level squash champion, studying in PEC, research paper submitted in NASA, superb communication skills, and then you must be wondering कि भाई ये क्यों नहीं हुआ, अपने पास तो ये भी नहीं है है ना. उसके पास एक ही प्रॉब्लम थी जिसका हम शब्द यूज करते हैं, इंटेलेक्चुअल एरोगेंस. अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, वन यू नो दैट यू आर गुड, इट्स ओके. सो नो दैट यू आर गुड इज ओके, बट टू नो दैट यू आर गुड and you don't give damn to others is a problem.
Am I right? This guy's body language used to exhibit to the faculty was, oh, I am hero. And you know, faculty said, go to hell. तेरे जैसे 10 लाइन में लगे हैं. We find small reason to throw people out. अरे भाई, why? What IIMs need? Business leaders. What is expected out of you? Obviously, you go, see, you have a different perspective. When you join a B school, what is your perspective? कि भाई अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी सैलरी मिल जाएगी, अच्छा करियर मिल जाएगा, है ना? अच्छा, बी स्कूल को क्या चाहिए? फीस चाहिए? हाँ, फीस देने वाले तो सारे ही हैं. बी स्कूल को क्या चाहिए? उनका अलुमनाई कोई नाम करे, कोई बड़ा आदमी बने, बिजनेस लीडर बने, कंट्री को आगे लेके जाए. एम आई राइट? वो कहता है यार इतना एरोगेंट है, ये कहाँ लेके जाएगा आगे? एरोगेंस का कोई काम नहीं है लीडरशिप के साथ. आपने रिसेंट स्टेटमेंट पढ़ी होगी नारायण मूर्ति की, दैट ड्यूरिंग अर्ली डेज ही वॉज मेड टू स्लीप in a godown by a customer in US. पढ़ा किसी ने वो स्टेटमेंट पढ़ी थी? Recent he shared when I was at premier of Infosys. So there is no scope. So entrepreneur ऐसा ही होता है, business leader ऐसा ही होता है. गोडाउन में भी सो जाएगा, उसको 5 स्टार नहीं चाहिए. ठीक है? तो एरोगेंस का कोई काम नहीं है. और मैं जितने बड़े लोगों से मिला हूं, एक कॉमनैलिटी है, दे हैव बीन एक्सट्रीमली हम्बल, दे हैव बीन एक्सट्रीमली ओपन. देयर इज अ वार्मथ व्हाइल यू मीट देम. दे आर नॉट trying to project what they are not, they are what they are. So the interview, the problem is half of them try to project what they are not, and we are not, and we can see that in 10 seconds. I can look at somebody's body language. In last 25 years I have not seen anybody's certificate in my office when we conduct interviews, a piece of paper, because that's what I realized when I went for my first interview, that the marks on the degree is a piece of paper. You are what you are not what your marks are. Right? And what we see is only two things: the attitude of the person and ability to learn. And learning वही लेगा जिसके अंदर एरोगेंस नहीं होगी. जो सीख के तो मुझे आता ही है, सब कुछ आता है, आप उसको सिखा ही नहीं सकते. ठीक है? क्लियर? तो अभी इस स्टेज पे और लाइफ में किसी भी स्टेज पे, इफ यू वांट टू ग्रो, राइट, keep all sort of arrogance, intellectual arrogance, power of money. You are blessed that you have reached this stage. You could get into opportunity to maybe get a birth in a good family which could afford a good education to you. Be grateful to what you have got. There is no limit to our wants. The difference between need and want. So there is no limit to our wants in life. Remember this. This is never ending story. साइकिल वाले को स्कूटर चाहिए, स्कूटर वाले को कार चाहिए, कार वाले को मर्सिडीज चाहिए, उसको हेलीकॉप्टर चाहिए, है ना? उसके बाद लोग वो कौन सी पीछे जो आधे लोग बिलियनियर मर गए बेचारे, ओशन में जाके मर गए, खुजली है ना. अभी इलॉन मस्क उनको रॉकेट पे ले जाना चाहता है, 2-4 वहाँ भी जाके शहीद होंगे. एक आधा तो फटेगा ना भाई. इतने उड़ेंगे तो एक आधा तो फटेगा भी. So there is no end to our wants. Remember this. Okay? So, nutshell, what it takes is your self-belief and hard work. तुम्हें लगता है यहाँ आके एक वर्कशॉप अटेंड करके कोई दवाई तुम्हें दे देगा और तुम सक्सेसफुल हो जाओगे? तुम मूर्ख हो. I'll use the शब्द, तुम मूर्ख हो. तुम्हें खुद से करना है. हम तो सिर्फ तुम्हें गाइडेंस दे सकते हैं. एक इंटरव्यू के बाद अगला इंटरव्यू, सर एक और इंटरव्यू करवा दो. अरे भाई सीखा क्या?
ये तो आप उस पेशेंट की तरह हो जो कहता है हर 15 मिनट में ब्लड टेस्ट करा दो मेरा। अरे भाई एक ब्लड टेस्ट हो गया, दवाई ली, ठीक हुए नहीं हुए, अगला ब्लड टेस्ट तो तब कराएंगे, उसी रिपोर्ट को देखते के खुश होते रहेंगे, राइट। जैसे आधे लोग मॉक पेपर लेते थे, राइट, एक और ले लेते हैं, क्यों, पिछले में कम नंबर आए, अभी अच्छे नंबर चाहिए, थोड़ा सर बेटर फील करूंगा। दवाई लेने से बेटर फील करोगे या रिपोर्ट देखने से बेटर फील करोगे? यू गॉट टू डिसाइड, राइट। एंड एवरी इंटरव्यू टेक इट इज, एक और गलती, आपकी कुछ मल्टीपल कॉल्स होंगी, अब ओ ये तो हल्का वाला कॉलेज है, ये तो मैं निकाल ही लूंगा, फिर बेवकूफ़ी। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा आपको। कुछ साल पहले हमारे पास एक स्टूडेंट था, उसका नाम था सिद्धार्थ आलूवालिया। सिद्धार्थ आलूवालिया पैक में था और फरवरी के महीने में, कैट तो नवंबर में होता है, फरवरी के महीने में उसका फुल स्कोर आया जीआरई में। फुल स्कोर का मतलब समझते हो? यू कैन सीक एडमिशन इनटू एनी यूएस यूनिवर्सिटी विद ईज, यस और नो? ओके, बट सिद्धार्थ आलूवालिया was preparing with us for CAT. He was as honest in preparation as nothing had happened to him. I remember after this kind of a workshop, I met him after the interview and he said, सर मेरा इंटरव्यू ख़राब हो गया। तो क्या हुआ? सर मैं तैयारी उड़ा दिया मुझे पैनल ने। मैंने टिप टुप्स दी, रिजल्ट आए सारे क्लियर, अहमदाबाद वेटिंग, बैंगलोर क्लियर। तो मैंने उसको पूछा भाई क्या प्रोग्राम है तेरा? बोला सर सोच रहा हूँ इंडिया में रहूँ या बाहर जाऊँ, है ना। और इवेंचुअली वो IIM में नहीं गया, वो बाहर पढ़ने गया। पर भाई सिद्धार्थ आलूवालिया को ये टेंशन थी कि छोड़ूंगा कुछ नहीं, सब कन्वर्ट करूंगा। और उसकी या कोई और होता तो फरवरी से पार्टी शुरू हो जाती कि भाई यूएस में एडमिशन पक्की है, ये तैयारी तूने क्या करनी, धक्के क्यों खाने, कैट के इंटरव्यू की तैयारी क्यों करनी। दैट मेक्स हिम सिद्धार्थ आलूवालिया विनर। बात समझ रहे हो? तो विनर का मतलब क्या है? हर कॉल को उतनी ही ईमानदारी और जोर के साथ कन्वर्ट करना है। देखो कन्वर्ट कर लो, एडमिशन नहीं लेनी होगी तो पैसे मत जमा कराना, ठीक है ना। वो तो सेल्फ कॉन्फिडेंस है तुम्हारा, ओवर कॉन्फिडेंस है कि ये तो मैं कन्वर्ट कर ही लूँगा, है ना, कि हम बांग्लादेश से तो जीत ही जाएंगे या हम अफगानिस्तान से तो जीत ही जाएंगे। होता है ना फिर इस वर्ल्ड कप में कितने जिसे हम बोलते हैं उलट फेर, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि हम, और इंडियन क्रिकेट टीम मुझे तो लगता है अगर एक आधा मैच हार जाती है ना तो शायद जीत जाते हार बड़ी ज़रूरी है, हार बड़ी ज़रूरी है कुछ सीखने के लिए, राइट। सो व्हाट्स द टाइम राइट नाउ? 5 minutes I'll wind up and you can ask वो faculty को prepare. Okay, so I will just take you some of the questions and then we'll start with the second session. Okay, so your questions, if you have any like to ask me, I can speak endlessly on any topic, whatever I have learned. Okay, so some of innovations you have. किस तरीके की innovations है आपको? कुछ तो होगा। किस चीज़ से डर लग रहा है? मैं ऐसे उल्टा पूछता हूँ, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी से डर लग रहा होगा? हाँ जी, किस से डर लग रहा है? कोई टेंशन नहीं है। देखो थोड़ा बहुत, देखो हम ना एक सिंपल सी बात समझते हैं। अब हम let us say our age is 22, 23, 24, that's the typical age we are in, 25, 26. हमने इतने साल में कुछ सीखा है। मैं आपसे एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या अगले 1 महीने में आप अपनी किसी भी नॉलेज में कितना गेन कर सकते हो? क्वेश्चन परसेंटेज में, अभी तक आपने ज़िंदगी में 100 सीखा, ठीक है, तो अगले 1 महीने में क्या सीख सकते हो नया? 2 भी बहुत ज़्यादा बोल गए भाई चलो, मतलब नेग्लिजिबल, ठीक है।
हाँ, यू आर सपोज टू नो सम बेसिक थिंग्स, बट सो दिस इज आर्ट ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। हमें प्रॉब्लम क्या है कि हमें ये बताया जाता है कि सुपर हीरो सेलेक्ट होता है इंटरव्यू में, जिसका करंट अफेयर भी अच्छा हो, जो कैडेट्स में भी अच्छा हो, जिसने स्पोर्ट्स भी खेला हो, वो अकेडमिक्स में भी अच्छा हो, उसके कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छे हो, उसने डिबेटिंग भी की हो। व्हाट बुलशिट। डिड यू आस्क दैट सचिन तेंदुलकर ने ग्रेजुएशन की थी या नहीं की थी? टू गिव अ डैम टू इट। अभी पीछे में पढ़ा था, आई थिंक कोहली ड्रॉप्ड आफ्टर 12th। कभी उसने पूछा किसी ने उसको क्वालिफिकेशन उसकी? यू मे बी गुड इन 1 or 2 थिंग्स, यू कैन ड्राइव इंटरव्यू देयर, सो दैट्स इनहिबिशन। वहाँ फंबल मत करो कि सर I know that I have not been paying enough attention to what is happening around the world, but I have been spending my time on this area, that's okay, right? तो ये ऐसा नहीं है कि कोटा सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, nobody is perfect, right? So don't worry on that. हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि करंट अफेयर पढ़ो ही मत, जितना कर सकते हो उतना करो, लेकिन ये आपका डर नहीं होना चाहिए, इसके बिना भी आप सेलेक्ट हो जाओगे। ओके, क्वेश्चंस, इनहिबिशंस यू हैव। आपको लगता है कि ये चीज़ आपको इंटरव्यू की सक्सेस को रोक सकती है, वो क्या है? या जरूरी नहीं है। 30% फ्रेशर्स हैं, 40% फ्रेशर्स हैं, क्यों चाहिए वर्क एक्स? कोई ज़रूरी नहीं है। किसने कहा है ज़रूरी है? हाँ देखो, वर्क एक्सपीरियंस वाले ज़्यादा क्यों निकलते हैं, उसके 2 रीज़न हैं। जब तक आप कॉलेज लाइफ में हो तो आपने रियल दुनिया देखी है, रियल लाइफ देखी है ना। जब आप रियल लाइफ में जाते हो तो आप रियल लाइफ देखते हो। तो 2-4 बॉस से जब तक तो आप कॉलेज में होते हो ना, आप हीरो होते हो, माँ बाप को आप बेवकूफ़ समझते हो, है ना, टॉप ऑफ द वर्ल्ड होता है। मैं भी ऐसा था, आप भी ऐसे ही होगे। जब आप रियल लाइफ में जाते हो तो बॉस निकालता है गाली, फिर आप बोलते हो यार इसका दिमाग भी कम चलता है और मैं से गाली भी खाता हूँ। कितने लोगों को ऐसा लगता था जब आप वर्क कर रहे हो कि भाई ये क्या है, फिर बोलते नहीं अब MBA करूँगा। तो एक तो डिटर्मिनेशन ज़्यादा स्ट्रांग होती है, बिकॉज देखो ज़िंदगी में जब हम कुछ पाने की बात करते हैं तो या तो आप यू मूव टुवर्ड्स प्लेजर और यू मूव अवे फ्रॉम पेन। दो ही मोटिवेशन है लाइफ में। या तो आप किसी तकलीफ से बाहर आना चाहते हो, आप बहुत बुरे सर्कमस्टेंसेस में हो, वो आपकी मोटिवेशन है कि यार मैं साइकिल पे नहीं चल सकता सारी ज़िंदगी, पेन में हो, या प्लेयर की तरफ जाना चाहते हो, इधर वे। तो अब वर्कएक्स वाले, एक तो लाइफ के साथ थोड़ी मैच्योरिटी आती है, यू अंडरस्टैंड हाउ टू वर्क इन ए कॉर्पोरेट, तो थोड़ी सी वहाँ पर एक एडवांटेज आती है। ये नहीं होता कि किसी को, मैंने 5-7 साल वाले भी बेवकूफ़ देखे हैं और फ्रेशर भी अच्छा हो सकता है, ऐसा तो कुछ नहीं है, नो रॉकेट साइंस। तो वर्कएक्स की जरूरत नहीं है, बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, निश्चिंत हो जाओ। व्हाट एल्स? इनहिबिशंस। देखो अभी तो वो पब्लिक स्पीकिंग करवाई नहीं है आपसे, पहली बात। अभी तो प्राइवेट स्पीकिंग होगी कमरे के अंदर, है ना। दूसरा, जो नहीं किया वो तब तक डर है जब तक नहीं किया। जब करना शुरू करोगे वो डर निकल जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड, इन लाइफ ऑल ऑफ अस हैव ए फियर ऑफ अननोन, अनएक्सप्लोर्ड, ठीक है ना। जो नहीं किया होता ना उसका हमेशा डर रहेगा कि यार हिल में ड्राइव नहीं किया, गाड़ी पता नहीं चले। पहली बार कभी तो जाओगे, या तो कभी नहीं चलाओगे या पहली बार चलाओगे। माँ बाप से पूछना, जब तुमने चलना सीखा था क्या पहली बार खड़े हुए थे ड्र करके दौड़ने लग गए थे? पूछना कि पापा मम्मी मैं कितनी बार गिरता था, वो कहा बेटा तू रोज 50 बार गिरता रहा, लेकिन तू फिर खड़ा होके चलता था। अभी क्या नाम, बड़े हो गए, तब हमारा दिमाग नहीं चलता था, बॉडी चलती थी। अभी हम दिमाग ज़्यादा चलाते हैं, प्रॉब्लम एक ही है। फर्क समझ में आया? हम क्या चला रहे हैं? दिमाग।
वो खुदा गवाह एक पिक्चर थी हमारे टाइम में, उसमें अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग था, वो बोलता था कि गहरी सोच फैसले कमज़ोर कर देती है। ये जो गहरी सोच है ना तुम्हारी हर चीज़ के बारे में, यही तुम्हारी प्रॉब्लम है। बी इन द करंट, लिव इन द करंट, एंजॉय द जर्नी। क्लियर? कोई नहीं पेशेंस तुम्हारी है, कोई पब्लिक स्पीकिंग बोलेगा, कोई बोलेगा आपने बोला मैंने जीके नहीं आती। हम किस चीज़ों की बातें कर रहे हैं? उस अननोन जोन में, जिस अननोन जोन में वी हैव नॉट गॉट इनटू एंड वी हैव ए फियर ऑफ दैट अननोन, राइट? सो द बेस्ट टू is to remove that fear is enter that zone with the open mind. Enter. आप लोग तो बहुत लकी हो, मैंने अपना इंग्लिश पे काम करना शुरू किया when I was in my MBA and I was among that in my engineering that group which used to laugh at the people who used to speak English because हम गांव वाले लोग थे, है ना, क्योंकि हम कर नहीं सकते तो हम हंसते थे। सिंपल साइकोलॉजी। जो आप कर नहीं सकते ना, सबसे पहले उससे हंसते हो, ही। और ये बताते हो ये मैं करना नहीं चाहता, मुझे करना नहीं है ना, खुश हो जाते हो। That's what we do, psychology, right? So it changes. Don't worry on that. All of us have unknown zones. All of us have fears. The only thing is start doing hard work. Start hitting. वो हमारा कौन सा ओपनर था, क्लासिक केस है। You know, he was introduced to sports जब उसने ट्रिपल सेंचुरी लगाई थी। I am not able to recall the name. So why he was introduced to sports? डॉक्टर ने बोला कि इसकी चेस्ट में प्रॉब्लम है भाई, अगर इसको स्पोर्ट्स खिलाओगे तो शायद ये बच जाए क्योंकि इसकी चेस्ट वीक है, लंग्स वीक है। और वो बंदा क्या बना जाके? नेशनल टीम में खेला। क्या हुआ? अननोन जोन। ये तो बीमारी से आ गया वहां पे, है ना। सो ऑल सक्सेस स्टोरीज आर लाइक दैट। Okay, so I will take one session on art of conversation today, and thank you very much. And you have an opportunity today to learn, right, and grasp things and practice at home. Chalo, thank you.